मैं मजाक नहीं उड़ाने वाला, राइट? आई एम 100% श्योर आई एम नॉट गोना मेक फन ऑफ देम। नहीं, सही बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोना मेक फन ऑफ देम। लेकिन मुझे ये तो कहना पड़ेगा, इट वॉज प्रिटी फनी वॉचिंग देम से लॉन्ग लिव पायरेसी व्हाइल आस्किंग द प्लेयर टू बाय द प्रीमियम वर्जन ऑफ स्कल एंड बोन्स। All of this takes place in the largest action-adventure open world Ubisoft has ever done. गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू रेज योर हैंड्स अगर आपने बड़े होते टाइम को यूबीसॉफ्ट के गेम्स खेले थे। राइट हियर, जब मैं छोटा था, मैन, दिस कंपनी राइट हियर वॉज माई एवरीथिंग। जब कोई बड़ा मुझसे पूछता था आर्यन बड़े होके क्या करना है, आई यूज टू प्राउडली से मुझे यूबीसॉफ्ट में काम करना है। अदर किड्स हैड द ड्रीम ऑफ बीइंग अ पायलट, बीइंग अ फुटबॉलर, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग एन एस्ट्रोनॉट। आई यूज्ड टू से आई वांट टू वर्क एट यूबीसॉफ्ट। दैट वॉज माई ड्रीम। ये कंपनी मेरी पूरी दुनिया थी। आई लव्ड दिस कंपनी, इनफैक्ट आई स्टिल लव दिस कंपनी, and it just breaks my heart to see the company in its current state. Ubisoft is like that one ex I can't unfollow on Instagram. Playing Splinter Cell, playing Prince of Persia, also watching the movie, playing Assassin's Creed, also watching the movie, loving the performance of Vas and Pagan Min in Far Cry games, playing Ghost Recon and having an absolute blast. मैं कह नहीं सकता, लेकिन यंगर आर्यन का माइंड ब्लो हो गया था सैम फिशर को पहली बार स्प्लिट जंप करते हुए देख के। मेरा यूप्ले और यूबीसॉफ्ट कनेक्ट का अकाउंट इज मोर देन 12 years old, and that's only the games that I bought legally. I've been playing Ubisoft games before that, which were bought, not so legally. So ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? Because I just wanted to express my love towards Ubisoft and plus what I think about the company's current state. लेकिन जिससे पहले मैं Ubisoft के बारे में डेप्थ में बात करूँ, here's a quick history lesson on Ubisoft. Ubisoft was founded by 5 brothers in 1986, जो पहले फैमिली के फार्मिंग बिजनेस में थे, which wasn't really doing well. So they decided to sell computers to farmers. और कंप्यूटर्स के साथ नेचुरली वो लोगों ने वीडियो गेम्स बेचना भी शुरू कर दिया टू द फार्मर्स। आई एम टॉकिंग गेम्स लाइक फार्मिंग सिमुलेटर 84। That's not true. So they initially started out as game distributors which were only limited to France, and as the business kept on growing, they kept on expanding, and henceforth let it be known that their name was crowned Ubisoft Entertainment Software, जिसको बाद में कट शॉर्ट करके सिर्फ Ubisoft कर दिया। और कुछ सालों तक सिर्फ वीडियो गेम डिस्ट्रीब्यूशन तक लिमिटेड रह के द ब्रदर्स डिसाइडेड टू जंप इनटू द मार्केट ऑफ मेकिंग वीडियो गेम्स, और वो लोगों ने जो पहला गेम बनाया था वो ज़ॉम्बी, विच वॉज रिलीज्ड इन 1986। लेकिन द वीडियो गेम दैट वुड टेक यूबीसॉफ्ट टू द टॉप वाज रेमैन। और फिर इन द ईयर 2000s दे acquired such an important name that would help maintain their top spot in the American market, Tom Clancy. The Dark Knight का एक famous dialogue है, which is also now the most overused statement on the internet. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. लेकिन ये चैप्टर में I want to show you the good, the heroic part of the Ubisoft story arc. Like जो टाइम पीरियड नहीं था फ्रॉम 2000s to 2013, उस टाइम में Ubisoft ने इतने हाई क्वालिटी एंड ऑडियंस लव्ड गेम्स रिलीज़ किए हैं, इट्स एक्चुअली इनसेन। मैं स्टार्ट करूँगा टॉम क्लैंसी से, और स्पेसिफिकली टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल से। स्प्लिंटर सेल वॉज Ubisofts टेक एट द स्टेल्थ स्पाई थ्रिलर जॉनरा, जो पक्का किसी गेम को कंपटीशन देने के लिए रिलीज़ नहीं किया था। एंड यू नो, ऐसा नहीं है कि स्प्लिंटर सेल इज़ बैड, इट्स जस्ट दैट Metal Gear Solid is way too good. It's not like someone else couldn't handle a stealth mission. Don't say that. This is the genre we turned over every leaf in. Why don't you make Sam or Gabe do the job? Snake. Yeah, a few I've heard they don't make them like me anymore. There was this other guy, though. Army infiltration. He wore a bandana or something. I heard he finally retired. Really? Yep. It's only me. Like Sam Fisher is the reason why I try to shoot lights in every game. Splinter Cell series शुरू हुई थी 2002 में, the year I was born, and would go on till the year 2013. और उसके बाद randomly Ubisoft just closed up shop and were like, बस काफ़ी Splinter Cell games बना लिए, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी सीरीज ruin करने। Like I know मैंने पहले ही कह दिया, but अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा फेवरेट Splinter Cell गेम कौन सा है, it is Chaos Theory. By a huge margin. Chaos Theory is exceptionally good. I think I would say ये मेरा favorite Ubisoft game है, closely followed by Assassin's Creed 3, which I'll talk about. I know it's a very underrated opinion.
लाइक माइकल आयरनसाइड ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज सैम फिशर कि उसकी वॉइस इतनी आइकॉनिक है कि हर कोई पहचान सकता है कि वो सैम फिशर की वॉइस है. Good work, Fisher. We can analyze the intelligence you gathered from those crates. We can make a lot of people's jobs a whole lot safer. How come no one ever does things to make my job safer? If you want me to hire some more analysts to interpret information for you, I can. Second thought. Danger's not so bad. हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि इस एंटायर सीरीज में सारे पार्ट्स आर लाइक एक्सेप्शनली गुड. इस सीरीज में वीक एंट्रीज भी हैं जैसे डबल एजेंट एंड कन्विक्शन. लेकिन मैं कन्विक्शन को वीक एंट्री नहीं मानता बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट स्प्लिंटर सेल गेम जो मैं ख़त्म कर पाया. That just goes to show कि over the years Ubisoft tried its hardest to serve to the casual player so that everyone could beat the game. Splinter Cell series की final entry आई थी 2013 में, which was Splinter Cell Blacklist, and it introduced that one thing which I really hate: fucking grinding gear in a spy thriller game. What a dumb fucking decision. लेकिन apart from that, the game is actually pretty good. You should play the game if you want to, but Chaos Theory for sure. पहले वही खेलना if you plan on playing Splinter Cell, because Chaos Theory इधर, oh my hand went out of the frame. अगर Chaos Theory इधर है then I think I'd put Conviction here for me and then Blacklist here. I know Pandora Tomorrow भी बहुत अच्छा है, but these three forever. I love those Splinter Cell games and I 100% recommend that you play them. और अब इसी टॉम क्लैंसी यूनिवर्स में देर आर 2 more great series, Rainbow Six एंड Ghost Recon. ये दोनों ही गेम्स टैक्टिकल शूटर्स है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैंने कभी ज़्यादा Rainbow Six खेला नहीं है. जितना Rainbow Six मैंने खेला है वो है, मैंने Rainbow Six Vegas खेला था अपने दोस्त के पीसी पे, और जब मैं थोड़ी देर खेल रहा था 10-15 मिनट बाद, उसके बाद मेरा दोस्त कमरे में आया, उसने Rainbow Six Vegas मुझसे बंद करवाया और फिर रोड रैश लगाया. एंड ऑनेस्टली मैं क्यों ही मना करता रोड रैश खेलने से. Ghost Recon, I fucking love Ghost Recon. जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना सिंक शॉट करने में इन फ्यूचर सोल्जर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स. लेकिन जब मैंने ग्रॉ और ग्रॉ 2 खेला था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव एवर हैड एज अ किड, यू नो, बिकॉज अब खेलूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर ईजी लगेगा, बट बैक देन प्लेइंग ग्रॉ एंड ग्रॉ 2 फेल्ट लाइक अ मॉन्यूमेंटल टास्क. आपकी जो टीम ऑफ गोस्ट्स होती है, आप उन सब गोस्ट्स के लीडर होते हो और यूर द गोस्ट लीड. सो आप अपनी पूरी टीम का मूवमेंट एंड प्लानिंग डिसाइड करते हो, एंड एक गलत मूव, सिर्फ वन स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू यू लूजिंग योर टीममेट्स. एनिमी के एक गन बर्स्ट से आपके टीममेट्स या आप मर सकते हो. और ऐसा नहीं है कि अगर आपके टीममेट्स मर गए तो मिशन एंड हो जाएगा. नो 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 नो, you'll have to carry on the mission alone. अगर सारे टीममेट्स मर गए तो आपको मिशन अकेले ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं हो पाता you can either start the entire mission again from the start, up to you. But it was a really rough experience, you can imagine, because as like a 11 or 12-year-old trying to understand what is happening, really tough. ग्रॉ 2 में मेरा एक फेवरेट टीम मेंबर था, चलो उसको बोलते रॉकेट मैन, उसका नाम था. ही कैरिड अराउंड अ रॉकेट लॉन्चर, और उसने मुझे मेरा मिशन फेल होने से इतने बार बताया है, लाइक रॉकेट मैन वुड क्लच अप एवरी टाइम एंड सेव माई एस फ्रॉम फेलिंग द मिशन. सो मुझे याद है देयर वाज अ मिशन दैट आई वाज प्लेइंग, आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम ऑफ द मिशन एनीमोर, बट उस एक मिशन के एक पार्ट में टैंक आ जाता है आपके सामने. सो एज अ प्लेयर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू कैन स्नीक अराउंड द टैंक और डिस्ट्रॉय द टैंक. मी बीइंग कि मेरे पास रॉकेट मैन है, आई एम गोना डिस्ट्रॉय द टैंक. सो गलती से मैंने, आई रिपीट, गलती से मैंने, rather than giving Rocket Man the objective to shoot the tank, I asked him to move towards the tank. And before I could realize what had happened, I literally watched Rocket Man get obliterated in front of my eyes. Like playing Graw 2 changes a man. Like this was my Aerith Sephiroth scenario. अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट गोस्ट रिकॉन जो मैं ख़त्म कर पाया, गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर, एंड इसलिए ख़त्म कर पाया बिकॉज ये गेम टैक्टिकल कम और एक्शन ज़्यादा था, एंड आई रियली लव दिस गेम. और मुझे वो जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो इस गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर का गेम प्ले. प्रिंस ऑफ पर्शिया, आई डोंट थिंक मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी है. एवरीबडी नोज प्रिंस ऑफ पर्शिया. स्पेशल शाउट आउट टू द गेम्स म्यूज़िक, जो मैं प्ले नहीं कर सकता बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा. अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा फेवरेट प्रिंस ऑफ पर्शिया कौन सा है, प्रिंस ऑफ पर्शिया 2 थ्रोन्स, और वो मेजरली बिकॉज उस गेम का बॉक्स आर्ट बहुत कूल है. फार क्राई गेम्स, और पर्टिकुलरली एक फार क्राई गेम,
फार क्राई 3। मैंने आज तक ऐसा कोई भी गेम नहीं खेला जिसकी स्टोरी और गेम प्ले इतना एक दूसरे से कनेक्टेड हो। Showing Jason's descent into madness after watching his brother get assassinated right in front of him, and with every kill that Jason gets, he keeps losing himself. Like इतना अच्छा कनेक्शन एक गेम प्ले और स्टोरी के बीच में आप कभी नहीं देखोगे जितना अच्छा फार क्राई 3 में। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम वास, विच इज़ आई थिंक इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट विलन्स इन वीडियो गेम्स। क्या परफॉर्मेंस दी है माइकल मैंडो ने। एंड फन फैक्ट अबाउट द गेम दैट माइकल मैंडो नॉट ओनली डिड द वॉइस लाइन्स इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन फ्रेंच एज वेल। आपको फार क्राई 3 खेलना चाहिए जस्ट फॉर इट्स स्टोरी बट ऑल्सो वन पर्टिकुलर मिशन। It's a mission that involves using a flamethrower, and those who have played the game know what I'm talking about. और on the bonus side, एक चीज़ जो आपको ये गेम और सिखाएगा is to never be a simp. Far Cry 4. I know it's a game that is close to all of us. I mean मैं तो शॉक हो गया था जब मैंने शैंग्रीला सेगमेंट्स में पहली बार हिंदी बोलते हुए सुना गेम में। जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? The game is heavily inspired by the culture of the Himalayan areas. वैसे तो कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि वो इंडिया से बहुत inspired है, but the game is actually inspired a lot from the culture of Nepal and Bhutan, which is a lot more similar to ours as well. So I don't really see the point. You can take the credit. Why the fuck not? That's the closest we've come to seeing a game in India anyways. लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है Far Cry 4 के बारे में वो है Pagan Min, the most likable antagonist. Period. Hell yeah! Hello, RJ. Did you miss me? Oh, wait, yes, you did. Pagan? I just killed you! No, you just ruined a perfectly good body double with hair loss. Do you know how expensive he was to make? He wasn't even Asian, for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. His only crime was being born with fabulous cheekbones. अब आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि आर्यन वॉच डॉग्स नहीं बोला, वॉच डॉग्स नहीं बोला, वॉच डॉग्स नहीं बोला। You're not gonna like what I have to say. I don't like Watch Dogs, and honestly, Sleeping Dogs is the better dog type game. I didn't like it. I've never liked any Watch Dog games. I don't know. I tried them. I tried really hard to play them, but I just couldn't get into them. अब आते हैं the one that everyone has been waiting for. Assassin's Creed. Good old Assassin's Creed. Did you guys know Assassin's Creed Ubisoft का initial plan था भी नहीं. Development project initially was to make Prince of Persia 3D. लेकिन Ubisoft इतना excite हो गया वो prospect से and seeing that it looked so promising that they decided to make it a new IP called it Assassin's Creed. और अगर अब आप सोच रहे हो कि यार अब वो बेचारे Prince of Persia fans को क्या मिला? Prince of Persia Sands of Time starring Jake Gyllenhaal. And personally, I wouldn't complain. Playing Assassin's Creed as Altair bin Laad. Good pronunciation? Yes? No? Having the opportunity to explore 3 major cities that are fully detailed and explorable, and also while traveling in between these cities, the outskirts that you encounter, which were, 95% of the times pointless, apart from that one time when you would run into that Red Templar, that shit was scary. लेकिन इतना बड़ा open world होना in 2007, that too with good graphics, was an achievement by itself. और फिर Assassin's Creed 2 से स्टार्ट होती है Ezio Auditorium की आर्क। और Ezio गेमिंग में इतना आइकॉनिक नाम है। I think it's the second most user name in Valorant, right after Hitachi. Like मैं तो समझ गया था कि Assassin's Creed 2 is going to be a masterpiece जब मुझे पता चला you can use a fucking झाड़ू as a weapon. Assassin's Creed 2 had my favorite villain in all of the Assassin's Creed games, Cesare Borgia? What the fuck? लेकिन I remember Assassin's Creed Brotherhood as the game that I regret playing in front of my parents. Assassin's Creed Revelations was Grandpa Ezio, and you got to see the end of the Ezio story arc. Rest in peace, legend. और फिर, ठीक है, now this is important and I want you guys to pay attention. और फिर आता है, and this is a very controversial statement, मेरा favorite Assassin's Creed 3. And I can already see the people crying in the comments, and no matter what you say, Assassin's Creed 3 is superior and the best Assassin's Creed period. Like अगर आप उस गेम का cinematic trailer ही देख लोगे, that is a masterpiece by itself. I make it a deal that I watch that trailer every once in a month.
And also Assassin's Creed 3, best combat in all of the Assassin's Creed. No Origins, no Odyssey, no Valhalla, no Black Flag, nothing. Best Assassin's Creed combat and best Assassin's Creed game for me or by me. That's my opinion. Now, if you agree with it, don't agree with it, you can comment down below. But if you disagree with me, I don't really give a fuck about what. I'm lying. I read the comments. I do. Sometimes I don't react to them, but that doesn't mean that I don't read them. I read them, but I just get lazy about replying to them. And next आता है सबसे popular, सबका favorite, a fan favorite, Assassin's Creed 4 Black Flag. And honestly, an amazing game. Don't get me wrong, it's an amazing game. Having naval combat, big fish hunting, carrying on the Kenway bloodline. Honestly, all in all, an exceptional game, a lot of fun. लेकिन एक चीज़ जो लोग भूलते हैं Black Flag के बारे में, that it's also the game in which Ubisoft introduced microtransactions for the first time. Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. विलन आर्क तो अब शुरू होती है यूबीसॉफ्ट की. मुझे लगता है 2013 के बाद यूबीसॉफ्ट का गोल शिफ्ट हो गया फ्रॉम मेकिंग इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग गेम्स टू मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट. सो इट वाज गेटिंग वेरी कॉर्पोरेटाइज्ड, टू से इट इन अ सिंपल वे. Like their only goal was to, how do I make the most revenue out of this commodity that I'm releasing? Introducing microtransaction in a single player game is an insane concept, and making the game so grindy that eventually सारे player funnel हो जाएंगे and have their backs against the wall and consider करेंगे यार microtransaction ले ही लेते हैं, rather than spending 2 or 3 hours for grinding for a gear, which will eventually lead me to so that I can continue the main storyline. I think that's just unfair. That's borderline unethical in my opinion, how Ubisoft approaches that. And honestly, it's just rubbing salt on wounds when you call those microtransaction time savers. देखो, ऐसा नहीं है कि मैं माइक्रो ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट हूँ. इफ माइक्रो ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट इन अ फ्री टू प्ले गेम्स, देन आई एम टोटली फाइन विद इट. हाउ एल्स इज द गेम गोइंग टू जनरेट मनी? सो आई अंडरस्टैंड दैट माइक्रो ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट इन फ्री टू प्ले गेम्स, लेकिन asking for money in a single player game जिसके लिए the customer has already paid for the game, that I think that should be illegal. That should be, there's no way a single player game should have microtransactions. No fucking way. Imagine if From Software did that shit, putting Rivers of Blood and Mimic Tear Ash behind a paywall. Like, From Software would be rolling in money right now. And I don't know, Ubisoft, people tend to start noticing that they're doing the same shit in different games again and again and again. I am dumb, but I'm not that dumb. Like, playing a Ubisoft game feels a lot like having pizza for dinner every time. Like, एक दो बार ठीक है, लेकिन उस एक पॉइंट के बाद आप भी बोलोगे मम्मी बस हो गया यार पिज़्ज़ा, कितना रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा खाऊंगा. Listen, I could go on for hours criticizing Ubisoft, लेकिन वो मेरे ये वीडियो का गोल नहीं है. I just wanted the video to show my love towards the company. हाँ, like मैं मजाक उड़ा सकता हूँ Division का, Assassin's Creed games का, Far Cry games का, Rainbow Six Siege का. Of course I can do that, लेकिन it's like that's nothing new. और अगर आप सालों से यूबीसॉफ्ट के गेम्स खेलते आ रहे हो, देन आपको इन गेम्स की प्रॉब्लम पता है. बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर आप न्यू हो इंडस्ट्री में और आपने अभी गेम खेलना चालू किया, अगर आपको यूबीसॉफ्ट गेम अभी पहली बार खेलोगे, देयर इज़ अ हाई चांस, आई मीन आई एम 100% श्योर आपको उस गेम में बहुत मज़ा आएगा. और आपको जो प्रॉब्लम दिखेगी वो प्रॉबेबली सिर्फ माइक्रो ट्रांजैक्शन होगी. लेकिन जिन लोगों ने बहुत टाइम से खेला है ना, उन्हें वो प्रॉब्लम्स दिखेगी, बिकॉज व्हेन यू आर अ न्यू प्लेयर, राइट. और ऐसा नहीं है कि यूबीसॉफ्ट के गेम्स ख़राब हैं. लाइक यूबीसॉफ्ट के गेम्स में ऐसा नहीं कि वो दे आरंट फन टू प्ले. लाइक यूबीसॉफ्ट के गेम्स आर लाइक अ कांस्टेंट 6 और 7 आउट ऑफ 10 एवरी टाइम. एंड आप न्यू हो तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा यूबीसॉफ्ट के गेम्स. मेरी प्रॉब्लम है, और जो लोग बहुत टाइम से यूबीसॉफ्ट के गेम्स खेलते आ रहे हैं, इट्स विद द लैक ऑफ इनोवेशन. ऐसा लगता है कि यूबीसॉफ्ट क्रैक द फॉर्मूला एक बार 7-8 साल पहले, और फिर वो लोग अब वही सेम फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं बार बार एंड कीप प्रोड्यूसिंग द गेम्स. आई थिंक मुझे तो लगता है यूबीसॉफ्ट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्टेटमेंट, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट. एंड दैट्स हाउ यूबीसॉफ्ट ने अपनी पूरी रेनबो 6 सीरीज बर्बाद कर दी. रेनबो 6 सीज इज अ कैश काउ फॉर यूबीसॉफ्ट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेम द एंटायर रेनबो 6 सीरीज हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. सो अर्ली ईयर्स में रेनबो 6 सीज खेलना फेल्ट अ लॉट लाइक काउंटर स्ट्राइक, और अगर आप अभी रेनबो 6 सीज खेलने जाओगे, इट्स गोना फील लाइक प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक विद वैलोरेंट एबिलिटीज.
I fucking love this company and it just breaks my heart to see it in its current state. And इतना मान लो कि nobody is rooting for Ubisoft to do well more than me. लेकिन वो मुझे भी पता है बहुत unlikely है. लाइक इस साल फिर से आएगा नया Assassin's Creed Shadows और देख लेना मुश्किल से सेम गेम होगा विद 1 or 2 न्यू मैकेनिक्स और इस गेम में माइक्रो ट्रांजैक्शन भी होगा 100% और उसका टेस्ट तो आपको ऑलरेडी दिख गया था जब ये लोगों ने इस गेम के प्राइजेस अनाउंस किए थे. स्टार वॉर्स आउटलॉ भी आएगा लेकिन मैंने कभी कोई स्टार वॉर्स गेम खेला नहीं लेकिन गेम प्ले देख के इट लुक्स वेरी गुड बट अगेन एट द सेम टाइम you don't know what to expect with this company. And then the one Ubisoft game that I am waiting for is the Splinter Cell remake, which was announced, but कब आएगा no idea. I think Splinter Cell remake is gonna be the new Hollow Knight Silksong. It's never gonna come. और रही बात मेरे बार बार कहने की कि Ubisoft should come up with new innovative ideas. First of all, I understand that एक AAA नया गेम विद फ्रेश कॉन्सेप्ट बनाने में ईजिली 5, 6, 7, 8 साल तो लगते ही हैं, वो मैं समझता हूँ. ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता कि यूबीसॉफ्ट कैपकॉम से इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेता. कैपकॉम इज़ लाइक हेल बेंट ऑन रीमेकिंग द रेसिडेंट ईविल गेम्स. लाइक वो लोग ने अभी रिसेंटली और 3 रेसिडेंट ईविल गेम्स का रीमेक आएगा वो अनाउंस किया एंड बट इट्स नॉट लाइक दे आर ओनली वर्किंग ऑन रीमेक्स. वो लोग साइमल्टेनियसली नया रेसिडेंट ईविल 9 पे भी काम कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट अप्रोच इज़ ग्रेट. ऑनेस्टली मुझे रीमेक्स ज़्यादा पसंद नहीं लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट वो एकदम परफेक्ट सेंस बनाते हैं. रीमेक्स की वजह से कैपकॉम अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर पाता है एंड बिकॉज ऑफ रीमेक्स इट गिव्स कैपकॉम मोर टाइम टू वर्क ऑन रेसिडेंट ईविल 9 एंड जस्ट इम्प्रूव देयर गेम. आई डोंट नो वाई यूबीसॉफ्ट कांट डू समथिंग लाइक दैट. और मुझे लगता है यूबीसॉफ्ट ये आइडिया अडॉप्ट भी कर रहा है बिकॉज इट वॉज जस्ट अनाउंस दैट Ubisoft is working on remaking the old Assassin's Creed games, which is great honestly in my opinion because it's gonna help the Ubisoft developers buy more time and give more time to a newer IP or a newer game with much more fresh and new innovative ideas. And I'm all for it because for 100% I'm sure that Ubisoft has some talented as fuck developers. It's just the time constraint of 2 years that's so rough. But again, मैं ये रीमेक्स के थियोरी के बारे में गलत भी हो सकता हूँ बिकॉज आई डोंट रियली नो व्हाट गोज ऑन इन दैट $1 billion कंपनी. एंड या दैट्स इट. आई हैव सेड माई पीस. आई डोंट रियली नो व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट यूबीसॉफ्ट. आई थिंक ये मेरा सेकंड वीडियो है यूबीसॉफ्ट पे. मैंने एक पहले भी बनाया था 2 साल पहले बट आई डोंट रियली रिकमेंड वॉचिंग दैट वीडियो बिकॉज द ओनली गुड जोक इन दैट वीडियो इज़ माई हेयर. अब कोई बोलेगा इस वीडियो में भी वही सेम जोक है. And now if I had to give some words of motivation before I end this video is like, Ubisoft, you're not alone. There is one company with you which is going down the drain. You know the one.